diplomatic mechanisms rather than unilateral actions. They warned that any attempt to deprive the country of its shared water would have profound consequences for regional peace and security. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar also spoke on this occasion, and his media covered his statement. The statement is also available on the website, but let me just recall that he said that the 6-decade-old Indus Water Treaty could not be suspended or terminated under any pretext, and this is the abeyance is quote-unquote illegal, unilateral, and without any basis. And he added that Pakistan unequivocally rejected this so-called abeyance. Pakistan also, let me add that Pakistan also rejects India's attempt to invoke baseless allegation of terrorism as a pretext for placing the Indus Water Treaty in abeyance and obstructing the lawful flow of the Pakistani shares of the Indus waters. The real issue is not terrorism. Let this be very clear. The real issue is not terrorism. The real issue is the growing disposition within the Indian leadership to treat shared international river system as a strategic asset that can be controlled, withheld, or diverted at will. This mindset of unilateral appropriation is fundamentally incompatible with letters and spirit of not just the international law, but also the Indus Water Treaty itself. Water is not a tool of coercion or political pressure. Any attempt to deny Pakistan its legitimate share of Indus water constitute a clear violation of the international legal obligations that India has undertaken and undermines India's credibility of its commitment to a treaty-based relationship. Moving on to safe arrival of 22 crew members that were Iranian crew members of a marine vessel. The DPM foreign minister made this announcement about the safe arrival of 22 crew members in Karachi. They were from Iran and basically were handed over onwards. Pakistan will continue to facilitate the early repatriation and of these Iranians held, on different ships who have been interdicted, and the total number of Iranian nationals repatriated through Pakistan is now over 70. On 29th June, ladies and gentlemen, the United Nations Special Envoy to Combat Islamophobia, Mr. Miguel Angel Maritonis, called on DPM Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar. He commended the special work being carried out by the Special Envoy to address the challenges posed by Islamophobia and expressed Pakistan's full support for his mandate, and hope that early finalization of the UN Action Plan to combat Islamophobia would provide the necessary framework for combating Islamophobia nationwide. You would recall that this appointment of Special Envoy was indeed a Pakistan's initiative at the UN General Assembly, which the UN General Assembly adopted, and now the Special Envoy is functioning. Let me very briefly touch on the Operation Ghazab lil Haq and Azm-e-Istihkam. Following the recent terrorist attacks in Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, Karachi, and elsewhere, the security forces launched intelligence-based operation under Operation Ghazab lil Haq. And on 28 June, 4 terrorists, including a high-valued Khawariji commander, Khan Farosh Abul Zabal, along 3 other terrorists belonging to the Indian proxy Jamaatul Ahrar, were killed in Bajaur. Pakistan reaffirms its commitment to eliminating terrorism while ensuring national security. Pakistan has always strived to maintain peace and stability in the region, and at the same time, we will not compromise on the safety and security of our citizens, which remains the highest priority.
So in the same vein, on the 29th June, the Afghan Charge Affairs was summoned to the Ministry of Foreign Affairs, and a strong démarche was issued regarding the Karachi terrorist attack. A similar démarche was handed over by Pakistan's ambassador Ubaidur Rahman Nizamani in Kabul to Afghan Ministry of Foreign Affairs. These démarches were issued in light of the fact that Afghan nationals, including one apprehended alive, participated in the terrorist attack, proving yet again that Afghan soil and Afghan nationals continue to be used to orchestrate terrorist attacks inside Pakistan. Moreover, the Interior Ministry has issued a directive to immediately arrest any Afghan national found residing in Pakistan without a valid visa or resident document, and we will earnestly implement this. Finally, ladies and gentlemen, Pakistan's membership to the International Olive Council. This is an important body of olive-producing countries to which Pakistan has joined. Formally, we took our seat as a permanent member of the International Olive Council for the first time during the first 123rd session of the Council held in Lisbon, Portugal, marking a significant milestone in the country's growing olive sector. The Minister for Food and National Security and Research, Rana Tanveer Hussain, led a Pakistani delegation to the meeting, and following Pakistan's accession to the International Olive Council, we were invited to participate in this session. This council comprises 27 other olive-producing member states, and we look forward to conducting what we call the olive diplomacy from here on, basically enhancing the production of olive and making it exportable commodity for our growers. And this will be an important addendum to our economic sector. So with these remarks, ladies and gentlemen, I'll conclude my opening statement and open the floor for any question answers. Ji Paracha Sahab. Thank you so much, Excellency. I have questions about India and Pakistan, sir. My first question is that yesterday, in pursuance of 2008 Consular Access Agreement, the lists of the prisoners were exchanged. But I really found a discrepancy in a way that India handed over a list of 439 Pakistani prisoners in their jails. But Pakistan maintained that, in fact, there are 753 Pakistanis detained in Indian jails. So what about these around 100 and so Pakistanis languishing in their jails, which are unaccounted even? My second question about the India-Pakistan relation is that over 100 eminent personalities from India and Pakistan, 61 from India and 56 from Pakistan, and even from Pakistan, Honorable former Foreign Minister Khurshid Mahmood Kasuri Sahab, or Excellency Shamshad Ahmed Khan Sahab, or Ashraf Jahangir Qadi, and from there, 3 former Chief Ministers of IIOK, they have written letters to both the Prime Ministers for dialogue, normalcy. So how Pakistan responds, or India should respond to the voice of these people? And my third question, brief question, is whether a seminar on Indus Water Treaty can ensure release of Pakistan's due water share and Pakistan can be preempted from being converted to a barren land without water. Thank you. Let me answer this. We'll take the other questions as they come. First of all, on your questions about the list of prisoners, yes, I did see your tweet title discrepancy. As you know, we have seen this. You have seen this. We handed over a list of 753 Pakistani prisoners to India yesterday. The list is meticulously compiled and maintained by the ministry and our mission in New Delhi. It documents all reported cases of Pakistani nationals detained in India, including those identified through newspaper reports, notification from families, and information received
from official channels. This is the list that exists. We pursue each individual case through its various stages, including the provision of consular access, confirmation of nationality, and eventual release and repatriation to Pakistan. While I cannot speak to the methodology used by the Indian side about how they prepare the list of Pakistani prisoners, we consider our list to be authoritative, authentic, and it's an authentic record of Pakistani nationals detained in India. The government of Pakistan will continue to take all steps possible to secure the early release and repatriation of Pakistani nationals detained in Indian prison. And in this regard, our dialogue through usual diplomatic channels with India will continue. On your second question about the letter of eminent personality, these are private individuals. They are fully competent to write anything. The government of Pakistan and the Ministry of Foreign Affairs, we neither endorse nor reject, and we do not have any particular comment to offer on it. The Indus Water Treaty Seminar, basically, as I said, was an important forum to take into account the legal foundation of the treaty itself, the salience of the treaty under international law, particularly under international water law, and management of transboundary rivers. And it underscored the wider dimensions of the Indus Water Treaty, which first of all is its hydrological dimension. The second is its dimension as an issue of human rights and humanitarian issue. You know, the river waters emerge or have a major catchment area in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. So it has that dimension. And what was highlighted was also its dimensions in terms of peace and security, the wider implication of the blockade of this treaty and its implications for the regional peace and security. This added to the repository of knowledge that we have on this subject and the discourse that is available on this subject. So in that sense, the seminar was immensely enriching. And as far as your comment about the converting Pakistan into a barren land, no country can do that. No, not India, not any other country has power to do that, and I don't think we should talk in the sense of barrening Pakistan. Mashallah, we are strong enough to prevent any catastrophe of this nature to happen. Thank you. Sir, thank you very much. Indian spokesperson has alleged yesterday that Pakistan, a place named Farrukhabad, a Gurdwara of 6 has been demolished by some unknown persons. I wish to have your comment and confirmation about this information of Indian spokesperson. And incidentally, this has come from a country where the mosques are being demolished, are being converted into the temples forcibly. Thank you very much. Yes, I saw that statement by the Indian External Affairs Ministry. We have ascertained details. This was a Gurdwara which was not practiced for worship anymore. There were no Sikh community, I understand, in the vicinity that would use Gurdwara for its religious purposes. So accordingly, this facility, this building was under private tenancy. The structure was old, in a dilapidated condition, and posed a potential risk to human life surrounding private property and surrounding private properties in the vicinity of that building. They feared that the building might collapse in the upcoming rainy season
As you know, there was an incident in Lahore as well, so there was a fear in the community. And as a preventive measures, the tenants initiated the work on this on the two section of this 7-part Gurdwara, and on 24th June. And I must underscore that this action was undertaken without the permission of the Evacuee Property Trust Board, ETPB, and in violation of the ETPB bylaws. So accordingly, the immediate remedial action has started and was taken to address the situation. The board halted the tenants' unauthorized work on the same day on June 24. They had, some building was affected, but the larger building was prevented. The tenancy and the lease was cancelled, and the tenants were directed to vacate the building. We would ensure that, you know, the building stays, and perhaps some renovation work is also possible. Regarding the other part of your question, it is deeply ironic that a country whose own record of systematic discrimination against prosecution of and prosecution of religious minorities, Muslim, Christians, Sikhs, Dalits, and other, has been widely documented by international human rights organizations, independent experts, and global media as well. And they have chosen to lecture us on an issue which was often of a very administrative nature. There was no mob which was destroying Gurdwara. There was no, and it was not licensed by the government, unlike in India, where these kind of activities take place under state patronage. So this was an individual act of few individuals, and the law is now taking remedial measures. So instead of pointing fingers elsewhere, India would do well to confront the grim realities in its own border under state patronage, the continued targeting of Muslims and other religious communities, and this targeting licensed by a BJP-led Indian government through communal violence, attacks on places of worships, discriminatory legislations, extrajudicial demolitions, inflammatory hate speech, and misuse of state institutions, and so on. These kind of actions reflect deeply troubling trends within India, and India should address those instead of raising an issue of administrative nature about Pakistan in an attempt to mask its own illegal action. So, and India, we would urge India to तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग जारी थी. हाजिर होंगे जियो हेडलाइंस के साथ. Tune into Geo News, your window to Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म ईरान और तुर्की के दौरे पर कल रवाना होंगे. वज़ीर-ए-आज़म शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे. बरादर मुल्क ईरान के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का इआदा करेंगे. वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना के दीगर वज़रा भी होंगे. दफ्तर ख़ारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग. तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी ने बताया कि दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई. पाकिस्तान कतरी शराकतदारों के साथ सहूलतकार और सालिस के किरदार को जारी रखेगा. तर्जुमान ने कहा है कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी है. पाकिस्तान अपने शहरों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा. अमरीकी क़यादत में सऊदी अरब, कतर, अमारात और ओमान समेत 12 ममालिक के फ़ौजी सरबराहान का इलाक़ाई सिक्योरिटी इजलास. आबना हुर्मुज़ में आज़ादाना तिजारती जहाज़रानी और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के अज़म का इआदा. सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल. अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा है कि ख़ित्ते के शराकतदार ममालिक के साथ ताउन जारी रखा जाएगा. ईरान की बहरीन में हुए इजलास पर तनकीद. खबरदार किया कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम अमरीकी फ़ौज के ज़ेर साया रहने से नहीं आएगा. बहरीन में होने वाला फ़ौजी इजलास खलीज फ़ारस में कानूनी निज़ाम या सिक्योरिटी कायम नहीं कर सकता.
ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान के जिन जौहरी मराकज़ को बमबारी से नुकसान पहुंचा है वहां आलमी तवानाई एजेंसी के मुआयना कारों को रसाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना था कि ईरान की पार्लियामेंट और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस कानून की मंजूरी दी है जिसके तहत इन मुआयना कारों को दी जाने वाली रसाई का तयन किया जाएगा। मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के फार्मूले पर नजरसानी की ज़रूरत है। कोई मुहाजिरीन को कानून साज असेंबली में उनकी नुमाइंदगी के हक से महरूम या बेदखल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की अपने बयान पर वजाहत, कहा कि गलत बयानी की जा रही है। हमेशा उनका मौक़िफ़ यही रहा है कि नशस्तों की मौजूदा हैसियत तब्दील करने की ज़रूरत है। इससे कबल फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा था कि मुहाजिरीन की नशस्तों का मामला एक बामानी बहस का मुतकाज़ी है। इस बहस के लिए मौजूद तरीन जगह कानून साज असेंबली है। जहाँ तक मुहाजिरीन की नशस्तों का ताल्लुक़ है तो उनकी मौजूदा हैसियत नाकाबिल कबूल है। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और GB अमीर मकाम की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और अवामी मसाइल के हल को अवलीन तरजीह दी जाए। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में ज़ेरे तामीर इमारत की दीवार गिर गई। एक बच्चा जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की टी आयरन और गार्डर की छत ज़्यादा मलबा डालने से गिरी। छत पर बच्चों की मौजूदगी में मिट्टी डलवाना गफलत थी। कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। सानहा काहना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि बच्चों की अमवात सर की हड्डियों पर ज़्यादा चोटें आने से हुई। ताहाल किसी मुतालिका सरकारी इदारे के किसी एहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हुए थे। स्वात में झील सैफुल्ला में सयाहों की कश्ती उलटने से लापता 17 साल लड़की की तलाश जारी। कश्ती उलटने के वाक़े में 6 अफराद जाँ बहक और 2 को रेस्क्यू किया गया था। रूस की यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइल हमलों में कम से कम 17 अफराद हलाक, 56 से ज़ायद जख्मी हो गए। यूक्रेन और रूस के मुतज़ाद दावे। यूक्रेनी फौज का कहना है कि हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन के इलाकों में एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया। तवील फासले तक मार करने वाले जदीद हथियारों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का मुआहदा। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशअल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रियाद में मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। मंसूबे के तहत दोनों मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तकनीकी महारत, स्टेडियम की मनसूबाबंदी और ऑपरेशनल मयार को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए कौमी अज़म बहुत अहमियत का हामिल है। आबादी के मामले पर हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन काउंसिल की ज़ेर एहतमाम तक़रीब से ख़िताब में मरीम औरंगजेब ने कहा है कि आबादी की तरक्की के अमल में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए हर तबके को अपना किरदार अदा करना चाहिए। गजा पर इस्राएली जंग को आज 1000 दिन मुकम्मल हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक इस्राएली हमलों में 73,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1,73,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। शोहदा में 21,500 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। गजा का 90% से ज़्यादा हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका, जबकि 80% इलाका इस्राएली फ़ौज के कंट्रोल या इनखला के अहकामात की जद में है। अक्टूबर 2025 की जंग बंदी के बावजूद इस्राएली फ़ज़ाई और तोपखाने के हमले अब भी जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में इस्राएल के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में तोसी से शहरों की जानों को मज़ीद खतरात लाहक है।
ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की शहीद रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामेनी के अलविदाई इज्तिमात में ईरानी अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। जारी बयान में ईरानी अवाम से कहा है कि वह शहीद रहबर मुअज़्ज़म के अलविदाई इज्तिमात में भरपूर शिरकत करके ईरानी तारीख में शानदार बाब रकम कर दें। कौम के इंतकाम की पुकार पूरी दुनिया के कानों में गूंजनी चाहिए। विमेन T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज मेजबान इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। जीतने वाली टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करेगी। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अभी आपको खबर दें, लाहौर के इलाके बागवानपुरा में ज़ेर तामीर इमारत की दीवार गिर गई है। रेस्क्यू काम का कहना है कि दीवार गिरने से एक बच्चा जहाँ भाग कर 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसील जानेंगे अहमद फराज से। अहमद, बताएगा ये वाक़या किस तरह पेश आया और क्या मलबा हटा लिया गया है? जी बिल्कुल, ये बागवानपुरा का इलाका है और यहाँ पर ये वाक़या पे गया है। ये तीसरी मंजिल की छत भी गिरी है और दीवार भी गिरी है, जिसके बाद जो है वो 4 लोग जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं, जिनमें एक नदीम है, शकील है, फयाज अहमद है और वसीम है। इनको सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और जब ये छत और दीवार गिरी है तो गली में से एक 8 से 10 साल का बच्चा जो था वो गुजर रहा था, ये उस पर मलबा गिरा है और उसकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी और इसकी हलाकत हो गई 8 से 10 साल बच्चे की। इस वाक़े में एक बच्चा जो है वो जहाँ बाग हुआ है और 4 अफराद जख्मी हैं, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और वो मलबा उठाने का काम कर रही है। रेस्क्यू काम का ये कहना है कि अब मलबे में मजीद कोई जख्मी या कोई लाश नहीं है। तमाम जख्मियों को और जो हलाक हुआ है उसकी लाश को यहाँ से। ठीक है, अहमद फराज बता रहे थे कि इस वाक़े में 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि गली से गुजरता एक बच्चा जहाँ भाग हो गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR हेडक्वार्टर का दौरा किया है और इजलास की सदारत की। इजलास में चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने वर्चुअल शिरकत की। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि माली साल 2025-26 के लिए रेवेन्यू हदफ हासिल करना तारीख़ी संग मील है। इस कामयाबी को गुज़िश्ता 2.5 साल के इस्लाहाती सफ़र के तनाजुर में देखा जाना चाहिए। टैरिफ रिलीफ फराहम